Hi Adhyayan, how are you? हाय हाय हाय, हाउ यू डूइंग? क्या हाल है? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताओ, आप घर में बैठे हैं क्या किसी सेट पे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं घर पे हूँ. आई हैव बीन ट्रैवलिंग बट फाइनली आई एम होम, सो इट्स गुड टू बी बैक होम एंड आई वाज वेलकम बाय अ लॉट ऑफ फूड दैट बिरयानी बाय किलो सेंड मी. No, no, hope you like the biryanis and the kebabs and the kormas. I love your food. I've in fact ordered your food a lot of times before from your place, so I love your food. No, no, I think आपको देख के मुझे लगता है कई लोग सोचते हैं एक्टर्स और सिंगर्स आप लोग खाते नहीं है ज्यादा खाना, पर यू लाइक फूड नहीं, या? no, I'm a huge foodie and the food has to happen once we are off set. तो हमें यूजुअली टाइम दिया जाता है कि द टाइम बिटवीन फ्रॉम वन फिल्म टू अनदर फिल्म और फ्रॉम one work to another work. When you have a little bit of gap, it's very important because see, at the end of the day we are human beings, right? And we all love food. ये जो इंसान जो बोलता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ या I don't like food, I think it's a lie. We all love food. We all love food, and but actors, of course, because they have to be on screen, so we have to be a little more careful about looking decent on screen. So, uh, but I love food. Yes, I do. I do. फिटनेस फ्रीक है इसमें? रोज जाके जिमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं? आर यू लाइक दैट? करना ही है ना सर. अब बिरयानी बिरयानी भाई किलो ऐसा खाना भेजेगा तो फिर जाके मुझे फिटनेस में फिटनेस पे ध्यान देना ही पड़ेगा मुझे. So it's very important. No, no, it's important. See, if you're eating, and if you're burning your food, and if you're eating once a week, if you're eating out, and I don't think that then there's a problem at all. आई So it's it okay. overall lifestyle which matters, and if I can say कि in बिरयानी बाई किलो मैं आपको आपको सब जानते हैं एंड वील टॉक अबाउट यू. मैं बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन बिरयानी बाई किलो का, इफ यू अलाउ मी, कैन आई गिव फॉर 30 Please, seconds? I want to know because um, I owned a restaurant, so I want to understand कि of course you're a brand, and I want to know कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? How did you manage to build your brand and stay alive, stay afloat during the pandemic also? I want to know, please. I'm very interested. No, no, thank you so much. So see, I'll make it fast also. कि I've done my engineering from IIT. मैंने US से MBA किया. Then I have been an entrepreneur in IT industry, and I was an investor in private equity funds and hedge fund. तो काफी मैं F&B businesses में invest करता था और food businesses में. तो in Right, 2000 we realized कि भाई इंडिया से वो क्या कैटेगरी है जिसको लेके हम इंडिया वाइड चेन बना सकते हैं या वर्ल्ड वाइड. तो right, बिरयानी फूड डिलीवरी उस समय वर्ल्ड वाइड आ रहा था. जैसे व्हेन वी लुक्ड एट यूएस, सिंगापुर, एशिया, यूरोप, right, डिलीवरी, ग्रब right, हब, सब फूड फूड पांडा. तो इसे बिरयानी डिलीवरी फोकस right, कैटेगरी है. इट्स अ कंप्लीट मील, लाइक इट्स अ भी कार्ब्स भी हैं, right. प्रोटीन भी है, एंड भी रेसिपीज. तो पर हमने कहा कि 10 भी रीहीट कर दो एक दिन. हमने कहा कि 5 किलो का यूएसपी है कि इट फ्रेश इन द हांडी. हांडी में दम कुक करेंगे, उसी में डिलीवर करेंगे कस्टमर के ऑर्डर आने के बाद. तो इसलिए हाँ, 1 घंटा हाँ. लगता है. और जो राइस भी हम यूज करते हैं वो 2 years नेचुरली एज्ड. द मीट्स आर बुचर्ड इन हाउस, द स्पाइसेस आर हैंड पिक्ड, तो वेरी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स. बट बिरयानी डिलीवरी कैटेगरी मेड फ्रेश. तो नाउ वी हैव 45 आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया इन 25 cities. तो Oh, टच वुड. amazing. हाँ. Touch wood, touch wood, touch wood. नो, नो, टच वुड. आपका रेस्टोरेंट किसकी, विच कैटेगरी, विच कुजीन यू डू? It's right now currently shut because of the pandemic, but बोल रहा हूँ, I own a restaurant called Thuso with my partner Jay Torani. ओके. It is an Indian restaurant, and in fact, last year we won the best dark kitchen award by Midday. So ओ. yeah, because I was always very intrigued by the F&B industry, and I always wanted to be a part of it. And then I realized, मैंने जब kitchen खोला अपना पहली बार, तो I was there in the kitchen working. I could have had n number of people doing everything in the kitchen, but it was very important कि if you're trying to get into a business, it's very important to learn the business and be physically present there. तो मैं खाने भी पैक करता था, मैं सब कुछ करता था वहां पर, trying to understand the customer base, because you have to understand what do your customer and what your target audience is. Just like in films or in web series or songs, whatever we make, we have a certain target audience in mind. And with the food also, you have to understand who we eventually plan to target. So it's a very interesting industry to be in, but a very competitive industry to be in, because there are so many restaurants. Everyone's giving the same thing. How are you different from one another? That is what different. I think. What you have. No, no, I think touchwood, but we have now we are almost 100 crore company now. So we are the leaders in biryani delivery category and kebabs in India now. And Oh, hopefully that's we amazing. so going out.
but you are a man of many talents. आप खाना भी बना लेते हैं, बेच लेते हैं, आप एक्टिंग भी कर लेते हो. And I heard some of your songs yesterday when I was looking at your जी जी profile, and I was जी जी. amazed to hear your voice. तो Thank you आप, so much. Thank you. but if I can ask, who आप अपने दिल से पहले क्या है? एक्टर है, सिंगर है, बिजनेसमैन है, कहाँ पर आपका दिल ज्यादा I फिट? think I think मैं दिल से एक artist हूँ. Honestly speaking, I'm an artist. You know, an artist has no limitations, has no boundaries. I think I'm very grateful and thankful to God that थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत डायरेक्शन भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, और बिजनेस में भी बहुत शौक है मुझे लाइफ में. I want हाँ, to open a business as well. That is why I got into being a restaurateur. There's a lot that I want to do with my life, and I feel that when you are gifted, life itself is a gift, and when you have that gift, it's very important to get up and keep learning and inventing and reinventing yourself and keep doing new things and keep learning from your failures. I think लोग जो हैं फेलियर से बहुत डरते हैं. मैं तो फेलियर से बहुत खुश होता हूँ लाइफ में कि मैंने जितना कुछ सीखा है वो मेरे जिंदगी ने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया लाइफ में. So it's very important, and I'm very very happy that at 32 I'm wanting to dabble into so many things. I think if you are pretty centered in your head, I think you can do a lot many things in life. तो बस कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ सर. I think all the experiences help. I think what you inculcate through different experiences, वो आप एक्टिंग में भी आपको हेल्प करता होगा. Those experiences, those Of course, sir, characters. वही help करता है sir, because I people always ask me कि did you go to an acting institute? I mean, I studied in London. I did my theater from there. I went to New York Film Academy. I got my diploma in direction. But acting एक ऐसी चीज है जो जिंदगी से बेहतर आपको कुछ एक्टिंग सिखा नहीं सकती. जिंदगी is itself the emotions that you go through in your relationships with the people you meet in your business, in your professional life, all that helps you be the actor that you want to be. So that is why, when I look back into my life today, I'm very, very thankful for all the experiences that I've had, whether they're professionally, whether they're or personally, all of them where I failed and I got back up in my life and I learned so much from it. I think I'm very happy to go through those experiences, and people should be, blessed as well and look at bad experiences as positive experiences in life. Life is about experiences. If I can quote, I was reading something by Nawazuddin Siddiqui. He said कि साल मुझे काम नहीं मिला और मैं सड़क पे या whatever, मतलब not the best of conditions रहता था. But during those 10 years, he said कि I come across few hundred characters which are now part of. तो वही character करता हूँ to bring up. But if he has lived life and he has seen those characters up and close. So I think somewhere you've taken everything from those characters, which you can now portray on screen. No, absolutely. I think as Nawaz sir said that उनके पास काम नहीं था नवाज जैसे एक्टर के पास. तो आप सोचिए कि there was a point in my life where I've been in the industry for the last 10 years. मेरी शुरुआत राज 2 से हुई, जशन भट्ट साहब के साथ, जशन के साथ हुई, हिम्मत वाला, Heartless. I did a lot of films. Then I had no work for a couple of years, and it was tough. But then I realized maybe I'm going through, some sort of training that God is wanting me to go through with life and to see the world. Because मैं इतने protected खानदान से आता हूँ, being the only son, I had not seen the real world out there, and I'm guessing that is what I was supposed to learn. There's every person has to go through a certain amount of learning in their life, and I guess I had to go through that when I had no work, and I'm glad that it has happened to me. Makes a person who they are, their failures or their the pauses in their life, the full stops in their life, what makes the person. But आपको लगता है कि दूर से लोग देख के कहते हैं कि अध्ययन तो शेखर सुमन का बेटा है, उसे तो सब कुछ आराम से मिल जाता होगा, पर I think real life is very different. I think if people look into my life, and I've always been absolutely open with my life. I think people need to understand. I mean, actually not understand. People have realized now that my life has never been easy. और अपने पिता के छत्र छाया से मैं बहुत जो है मेहनत कर रहा हूँ कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, सुमन के नाम से, मतलब नॉट फिजिकली दूर हो जाऊं, बट अपनी खुद की एक आइडेंटिटी. नहीं, आपको देख के लगता है कि no, I'm saying आपको you're a very grounded person and you have worked hard in your life and you want to work hard and achieve a lot. That drive and that fire comes across very clearly when talking. Yeah. My failures have sort of my experiences that I said, जो हम लोग अभी इतनी बात जो हम लोगों ने की, those things have made me the person I am today, and success for me is, to be very honest, of course it feels very nice to be successful in life. There's nothing better than being successful. But अगर success हो और wisdom भी साथ में हो, तो your sustainability to be successful will be much longer in life. So I guess धीरे धीरे I'm moving towards that.
हाँ, वो लोग कहते हैं ना कि सरस्वती भी आनी चाहिए लक्ष्मी के साथ, तभी लक्ष्मी टिकती भी है। Yeah, इट इज लाइक yeah, that's what I'm. दैट। Yes, absolutely, absolutely, I agree, sir. Absolutely. तो अभी अभी जो आपका काफी आई सॉ जो इंस्टा प्रोफाइल आल्सो अभी व्हेन यू केम यू सेड टिंका जी। सिंह, तो टिंका सिंह अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है कैरेक्टर। हाउ? Tinka Singh, बहुत पॉपुलर है भगवान की दया से, you know, and again, once again, my father always used to tell me that there is that Adhyayan, remember one thing, that there is always light at the end of the tunnel, and Ashram OTT की one of the biggest hits अभी हुई राइट है प्रकाश झा की, जिसमें I play Tinka Singh, राइट। and honestly speaking, मुझे कोई भी अंदाज नहीं था कि आश्रम सबसे पहले एज अ शो इतना बड़ा हिट होने वाला है, और मेरा किरदार उसमें, टिंका सिंह का किरदार लोग इतना पसंद करने वाले हैं. And I honestly, it was like a shock for me, the amount of love that I've gotten for Tinka Singh in my life, you know. And but of course, I'm very, I have so much gratitude because Ashram came to me at a point जहां मुझे लगा था यार कि अगर आश्रम नहीं चलेगा तो मेरे पास आगे कोई काम ही नहीं है, you know. And it opened a lot of doors for me post that, and touchwood, because of God's grace, there's so much work I'm doing now, you know. नहीं नहीं। All I'm very grateful to the audiences, because audience के acceptance के अगर जब तक ना हो तब तक आप कहीं भी नहीं, चाहे वो आप रेस्टोरेंटियर क्यों ना हो, आपके खाने को जब तक जनता पसंद ना करेगी तब तक रिव्यू को क्या करेंगे आप लाइफ में. कुछ नहीं हो So it's सकता। the same thing for me as well, right? As an actor, people don't love me, they don't like me. What is the point? You know, there's no point. So I'm just again very thankful and grateful to the डू audience. यू थिंक कि नाउ यू मच्योर्ड एज एन एक्टर कि जब आपने टिंका सिंह का रोल करा, अगर आप ये 5 साल या 10 साल पहले करते शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते अभी Yeah, बिकॉज ऑफ योर। of course, because टिंका सिंह के अंदर सर एक ऐसा फायर था, हम्म। जो मेरी 8 साल की फ्रस्ट्रेशन थी वो मैंने पूरे उस रोल में निकाल दी, कि मेरे को, कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे वो बहुत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें मैं अपनी छाप छोड़ने की जरूर कोशिश करूंगा. और आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. यू नो, फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल, फायर। if people don't put you down, then there is no fire within, तो because a यू आर। lot of people put me down initially. I There was so much fire being built inside that I used it the right way. I never became an alcoholic, or I never became a druggie, or I never lost my sense of direction कि भाई मुझे यहाँ जाना है. अब भले ही मैं गाने में घुस गया, because मुझे एक्टिंग के सही ऑफर्स तब नहीं आ रहे थे, so I started getting into singing. But because of singing, a lot of acting offers again opened for me. ऑफ तो कोर्स। मंजिल तो एक ही है, पर राह दूसरी चूज की मैंने, बट आई कम बैक अगेन टू इट. सो यू नो, I'm no complaints from my side. Failures, pauses, full stops have to be used very well in life because they finally make it. And I think आपने वो सब इमोशन बहुत अच्छे से यूज करा है, पकड़ के रखा है उन इमोशंस जो जो भी जी. फ्रस्ट्रेशन, इफ आई कैन से हम्बली, मतलब इन हर आदमी की लाइफ में आते हैं, हर ह्यूमन बीइंग की ना, उसी को आप use कर रहे हो ना, तभी यू नो. एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद प्रकाश झा, बॉबी देओल, एवरीवन, द होल टीम? आई थिंक it was amazing sir, because प्रकाश झा साहब को मैंने जब मैं 19 साल का था तब मैंने उनको असिस्ट किया था. मैं जब न्यूयॉर्क से पढ़कर आया था तो प्रकाश जी ने मुझे पहली पहली नौकरी इंडस्ट्री में दी थी, और मैंने 3 हफ्ते में उनका वो फिल्म छोड़ दी, बिकॉज उनकी फिल्म की जो एक्ट्रेस थी, शी अब्यूज्ड मी व्हेन आई जस्ट वेंट टू कॉल हर इन द वैनिटी वैन. तो मैंने बोला यार ये इस तरीके से मैं काम नहीं कर सकता, और तब मैं प्रकाश जी को बोला भी नहीं कि सर देखिए मुझसे ऐसा बात करेंगे, तो प्रकाश जी क्लास ले लेते उसकी. बट देन आई केम बैक, एंड मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतने स्ट्रगल के टाइम पर मैंने इतने दरवाजे खटखटाए. प्रकाश झा साहब ने जब मुझे अपॉर्चुनिटी दी फॉर टिंका सिंह आश्रम के लिए, तो obviously my life changed because of that, and I'm eternally going to be grateful to Prakash ji. It's important to never forget your roots. It's important to never forget the people who are there in your bad times, you know. And he's been so amazing to me. And अभी मैं उनके साथ आश्रम 2 कर रहा हूँ, अभी उनके साथ मैं धर्म क्षेत्र कर रहा हूँ, उनकी अगली फिल्म कर रहा हूँ. So there is so much I'm doing with Prakash Jha right now, and his daughter Disha Jha, who has always been a true friend, and she promised me कि जब एक रोल आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, I'll give you that role. And जहां तक प्रकाश जी के साथ काम करने का सवाल है, सबसे खूबसूरत बात उनके साथ ये लगी सेट पर कि कोई भी बंदा जो है वो कोई ए लेवल का स्टार, बी लेवल का स्टार, सी लेवल का, ऐसा कुछ नहीं था. वो जो एक हायरार्की हम बोलते हैं, एक जो पेडेस्टल होता है सर्टेन एक्टर्स को दिया जाता है, वो तोड़ दिया था प्रकाश जी ने, और हम सब इक्वल थे. एंड व्हेन यू वर्क ऑन अ सेट लाइक दैट व्हिच इज सो ग्राउंडेड, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है काम करके. एंड बॉबी सर ऑफ कोर्स हैज ऑलवेज बीन अ सुपरस्टार, and you know, it was his comeback. Bobby sir के आदित्य की थोड़ी जिंदगी आवाज। काफी कुछ मिल. हाँ, हाँ, एक मिनट की आवाज चली हेलो, गई थी। कैन हाँ, यू हियर मी? अब आई कैन हियर यू नाउ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉबी सर की और मेरी खुद की, हमारी भी कुछ सिमिलर स्ट्रगल्स रही हैं.
बॉबी सर भी स्टार किड रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया अपनी जिंदगी में, फिर उनका एक बहुत बीच में गैप आया लाइफ में, तो मुझे वो बहुत अच्छी बातें बताते थे अध्ययन की, डोंट डू इट लाइक दिस, टेक थिंग्स लाइक दिस, डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, दैट फॉर ग्रांटेड। तो एक बड़े भाई की तरह जो है बॉबी सर जो है हमेशा रहे, और चाहे चंदन रॉय सन्याल क्यों ना हो, सारे लोग क्यों ना हो, आई लव्ड वर्किंग विद देम, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट बैक। आश्रम 2 अभी मैंने साइन की है प्रकाश जी के साथ, तो मार्च में शूटिंग शुरू हो रही है। Everybody wants Tinka now to come back again, and Tinka seemed to come back in a bigger role, in a bigger avatar. So I'm just hoping that I'm able to live up to people's expectations. जर्नी नाउ आई थिंक सबको एक अपना लाइफ में एक प्राइस पे करना पड़ता है, यू पेड इट, एंड आई थिंक नाउ यू हैव गॉट Yeah. द रियल अध्ययन, मतलब यानी कि तो नाउ आई थिंक आपकी जर्नी अब अप एंड अबाउट बस अब। अच्छा, मुझे काफी लोगों ने बोला आप अध्ययन के साथ लाइव कर रहे हो, प्लीज उन्हें वो गाना गाने को एक बोलो, वो जो आपका ये दिस सॉन्ग ना, दिस इस सारियानु छड़िया, आई थिंक आई जस्ट लॉस्ट यू फॉर अ सेकेंड। I think Adhyayan will come back. I think we had a poor connection. हाँ सर, Adhyayan, sorry, apologies. Yes, you wanted me to sing Sonio. वो सारियानु छड़िया आप दो तीन लाइन ही सुना दो, आई थिंक, या Saranu सोनी Chadiya. Whatever you want, I'll sing Saranu Chadiya, Sonio, what do you want? दोनों सुना दो। Can you hear me clearly? वेरी रब दी मेहर तू, तुझ जैसा है कोना, मुंडा में शहर दा, पर फैन तेरे कहर दा, रब दी मेहर तू, तुझ जैसा है कोना, मुंडा में शहर दा, पर फैन तेरे कहर दा, मेरे लिए तू है बन गई मेरी खुदाई, दिल विच आके एक लहर उठाई, लोग कहते मैनू तू है एक नजरों का धोखा, फर्क ना पैंदा क्योंकि मैं सारेयां नू छड़िया, सारेयां नू छड़िया, मैं सारेयां नू छड़िया, सारेयां नू छड़िया, मैं सारेयां नू छड़िया, सारेयां नू छड़िया, ओ ओ ओ ओ oh 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 oh. वाओ। सारा में छड़िया। No, but you're very talented. This is really, you have a very melodious voice. मतलब I think you should not, even if you become very successful as an actor, you never leave singing. I नहीं think सर, सिंगिंग ने तो मुझे बचाया सर, सिंगिंग ने तो मुझे is given me life, so I'll never give up singing in my life. no, but therapeutic भी होगा. I think that singing you can on your own. It can be very therapeutic. It can be very healing. कहीं ऐसा भी लगता गा है कि आप मेरे को ऐसा फेस रीड कर रहे हो, because singing has been therapeutic. I talk about singing as therapy only for me everywhere. हाँ, So it's always been an amazing experience. Just that I don't know. I just feel I'm musically a little blessed, which is no, very no. very important for me. ये तो आप दिल से गाते हो, सोल से, मतलब you can come out and you were, did you train as a singer as when you were a child, or you just No, sir. Never. It's just from the heart. As I told you that I'm everything in my life is from here, from my heart. So I never decided to train myself. I decided to just stay raw, and which is very very important. no, no, but it's too much. तो if you don't mind, सोनियो भी सिखा दो, कई लोगों ने स्क्रीन Of पे बोला, course, of प्लीज course, of course, sir, of course. प्लीज। Baby, come stand by my side.
Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give my love in all of my life. Sonia, oh Sonia, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं बस यही तुम जो मेरा साथ दो सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के ये जिंदगी तू दे दे मेरा साथ थामने हाथ चाहे जो भी हो बात तू बस दे दे मेरा साथ. You are truly talented, man. Truly talented. I think, I think many people might not know, but I also came to know yesterday only that you are such a fabulous singer when I was going through your profile. But Thank how you, sir. come Thank you. people now know that you are a good singer, or like it is still not? वो एक आपकी image as an actor is overpowering your image as a singer. नहीं सर अभी आई थिंक धीरे धीरे it's happening. My YouTube channel became one of the fastest YouTube channels to get the silver play button on my music, so it did extremely well. मेरा जो पहला गाना था आया ना 2.0 it crossed about 6 million. सोनियो जो मैंने गाना गाया उसका रिक्रिएशन मैंने किया था, is crossing about 27 million views now. So my music is doing slowly and steadily, it is doing extremely well, and I have 3 very big songs coming out in January, February, and March. So धीरे धीरे it's coming out, and I'm hoping that acting doesn't overpower singing and singing doesn't because they're two separate. But they mean the world to me. Acting and singing, it's difficult now for me to choose, because they both mean the world to me. और एक्टिंग सिंगिंग के साथ फूड भी मत छोड़ना. I think continue being in the food, loving food and selling. Maybe, I think it's really really nice. You're a very warm person and a very, I think, genuine person. नहीं सेम हियर सर, तो आपके और साथ खाने में conversation आपको करके और बहुत क्या? अच्छा लगा. खाने नहीं सेम हियर सी. बट अदर देन fan of butter. what other cuisine? I'm Huge fan a of. huge fan of butter chicken. Butter chicken सर, मैं butter chicken का बहुत बड़ा fan हूँ. Oh, तो मैं butter chicken, हाँ, I okay. cook as well. तो मैं butter chicken की रेसिपी बनाता भी रहता Oh, हूँ. you. तो मैं science I cook as well. So I cook biryani, I cook butter chicken. So someday hopefully आप कहाँ? I don't know. Are you from Delhi? Are you from Bombay? Where are you from? I am from Gurgaon. I'm from Gurgaon. You're from Gurgaon. I was just in Delhi right now for a meeting. मुझे पता होता तो हम लोग मिल भी रहते. But next time I'm in Delhi, Please, definitely I'll come down. please, it'll be lovely meeting you. Like we will exchange ideas about life, food, everything. You're a very, very humble person, and you'll do. I think आपकी जो upward journey अब शुरू हो गई है. Mark my word. जी. Talk after whenever आपकी upward journey. I think किसी की कभी होती है. आपकी काफी पर I think it'll be now upward and on now for you. I hope so, sir. Thank you so much, and I have to also thank you for the initiative that you've taken with me. कल Christmas है. And I have to tell everybody that Biryani by Kilo has come on board to give food for the homeless people tomorrow for 50 people, and I think that's a great initiative, sir. और लोगों का दिल इतना बड़ा usually होता नहीं है, and people know. We always do it during lockdown. Every city we are in, 25 cities, we were doing every week. We were doing during lockdown, and we continue to do. That's the best thing we can do. If food is about finally feeding people, making people happy. That good quality food, fresh food, hygienic food, and people happy. Like business तो होता रहता और होगा, right? It is about being honest, and we thank you so much for being part of it and taking it. Combined, we can do a lot. And we will, any sir, message you want to give to your fans? I want to tell them, please watch all my movies and web series, and while you're watching it, please call Food from Biryani by Kilo because it's amazing. And I'm hoping, sir, कि आगे जाके मेरे और आपकी association कुछ अच्छी association हो. It's very, very important that we do something. I'm sure you're already doing a lot. I'm pretty sure. And I would love to join hands with you and do something more beautiful in the coming future, sir. For sure. Thank you so much. It's a pleasure talking to us. We really wish you all the best from the bottom of my. Thank you so much. We had a lot of fun. Bye. Thank you, sir. Bye.